क्या स्कैन कॉपी किसकी लगी है? तो फिर इसमें क्यों नहीं आ रहा? दिखाइए, कहाँ है स्टेटमेंट, कहाँ है इसमें? 46 हाँ 46-26 कहाँ है ये? किसमें क्यों नहीं आया थे? मैं पास हूँ सर्टिफाइड को ये है, इसमें है जी, पैरा 12 में। वेट फॉर अ मिनट। पैरा 12 में क्या लिखा है सर? ये जब फर्स्ट 482 में आपने डायरेक्शन दिए थे कि रजिस्ट्रार साहब के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर, ये बात सही है। मतलब पैरा 2 माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आरोपी को पत्नी होना बताया था और निगाह होने की बात भी बताई पैरा थी। 12 पढ़ रहे थे ना? जी सर। हाँ। मुझे याद नहीं है कि मैं आरोपी की जमानत पर अनापत्ति देने कितनी बार हाईकोर्ट गई। ये बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आरोपी की पत्नी होना बताया था और निकाह होने की बात बताई थी। ये कहना सही है कि हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के सामने भी मेरे बयान हुए थे। मुझे आज याद नहीं है कि आरोपी नूरे सभा होटल आया था तो उसके आने के समय कितने बार होटल बुक कराई थी। ये क्या रिलेवेंट है? नहीं, ये सिर्फ इतना कि आप ये कह रहे थे ना कि शादीशुदा। हाँ, वो पैरा 19 में सर। अभी तो आप 12 बता रहे थे। वो लाइन आई कि हाईकोर्ट में पहले स्टेटमेंट। जी, फिर मेरी शादी जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में एनोलक से हुई थी। ये कहना सही है, मैंने प्रदेश P1 के आवेदन पत्र D1 के कथन एवं न्यायालयीन कथन देते समय ये नहीं बताया कि मेरी शादी कौशाम्बी में एनोलक से हुई थी। स्वतः का किसी ने पूछा नहीं था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं था। मैं वर्ष 2009 से एनोलक से अलग रह रही हूँ। ये कहना गलत है कि मैंने पुलिस एवं धारा 164 के कथन में मेरी शादी होने वाली बात जानबूझकर छिपाई थी। ये सही है कि इस्माइल सैयद पर धारा 420 भारतीय दंड विधान का एक अन्य प्रकरण चल रहा है जिसमें वो फरियादी हूँ। ये कहना सही है कि उक्त प्रकरण में मेरा मुख्य परीक्षण और कुछ प्रतिपरीक्षण हुआ है। ये कहना सही है, मैंने उक्त दूसरे वाले केस में भी एनोलक से शादी करने संबंध में नहीं बताया। तलाक की बात कहाँ आई है? कहाँ पूछा है आपने? नहीं, वो पैरा 34 इसने ये नहीं बोला कि तलाक हुआ, इसी ने नहीं बोला है। अरे भाई, मैं मेरे पति हैं। पैरा 34 आपने कब पूछा उनसे? पैरा 34 में उसने ये एडमिट किया कि मेरे पति हैं। शी इज नॉट सेइंग कि मेरे पूर्व पति हैं, या एडमिशन ये है कि मैं पति हूँ। सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट खुद ही कह रही है कि मेरे पति हैं। इसने खुद ही नहीं बोला कि कभी तलाक हुआ। मेरे पति हैं। सर स्टेटमेंट हो चुके हैं। आई जस्ट ड्रॉ लॉर्डशिप अटेंशन। वो जो मैं बात बता रहा था लास्ट टाइम आपने टाइम दिया था, पैरा 18 में है सर। वो क्या है 18 में? वही कि इनने बताया था कि मैं चुनाव आवेदन दिया कोर्ट में, मेरी चुनाव ड्यूटी, इसलिए मैं गवाही देने नहीं आ सकती। आई एम इन कस्टडी से, मतलब आपका लिबर्टी के बाद भी मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया इस डिले के वजह से। ये कहना सही है कि मैं सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल सिवनी में कार्यरत हूँ। यह कह सही है कि हमारे कार्यालय द्वारा वर्तमान विधानसभा चुनाव में मुझे ना कोई कार्य दिया गया, ना मैं चुनाव ड्यूटी लगाई थी। स्वतः कहा कि छुट्टी ना लेने के आदेश थे। साक्षी ने D2 का आवेदन पढ़कर बताया कि उसमें लिखी हुई बातें उसने अधिवक्ता को नहीं बताई थी। मैंने दूसरी बातें बताई थी जो इसमें नहीं लिखी है। कहना गलत है कि D2 का आवेदन पत्र मैंने असत्य रूप से अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कराया था। वो डिले इस वजह से हो रहा था सर। अच्छा। नाउ शी हैज बीन एग्जामिन्ड। एक ही विटनेस हुआ सर, आई एम इन कस्टडी। 9 महीने डिले FIR है सर। और कौन से मटेरियल विटनेसेस हैं? कितने विटनेस हैं? मेन तो यही 17 विटनेस, 17 विटनेस टोटल 17। हाँ। मेन यही थी सर। इसी आपने लिबर्टी दी थी फर्स्ट बेल में। कहाँ है वो ऑर्डर? मालूड दैट इज ऑन रिकॉर्ड मालूड, पेज 17 एंड 18 मालूड। Page 18 is second bill. A2 मालूड, पेज 15। जस्ट अ मिनट। ठीक। थर्ड है ये। सेकंड बिल में क्या हुआ? आपने वो लिबर्टी दी थी। Second is page 17 man. हाँ, फर्स्ट
First is page 15. फर्स्ट बेल में लिबर्टी मांगी थी चैटिंग से कन्फ्रंट करने की, किया है हाँ आपने? कर दी मैंने, वो एग्जिबिट एविडेंस में आया सर। हाँ बताइएगा। पैरा 27 मान लो, एक मिनट स्पेसिफिकली। पैरा 27, एक मिनट। हाँ ठीक जी। और आपको क्या कहना है? ठीक, I'll pass orders. आपको कुछ कहना है मैडम? जी बताइए। मेरा एक निवेदन था जी। कि इस्माइल सैयद पहला केस नहीं है उसका, वो हैबिचुअल अपराधी के साथ। उसने मेरे ही साथ नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के साथ भी चीटिंग की, क्योंकि आपकी ही अदालत से उस पर एक और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं। ठीक। तो एक अपराध को छुपाने के लिए निरंतर अपराध करते जाते हैं। ठीक ठीक। और सर हमारे कुछ गवाह रह गए हैं अभी। कौन रह गए हैं? जिस तरीके से उन्हें हमको डरा धमका के यहाँ पे झूठे कथन करवाया था। अरे मैडम अभी कौन गवाह बचा है आपका? 2 लोग हैं। कौन कौन है, नाम बताइए। आफाक खान और आफाक खान और उनके ड्राइवर थे। क्या नाम क्या है ड्राइवर का? फरहान। है? फरहान खान, आफाक खान और फरहान खान। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं सर। नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं होता, ये आपका काम नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम है। पेश कराइए इनको। क्यों नहीं, आपकी रिपोर्ट क्या है, क्यों नहीं आ रहा है ये गवाह? नहीं सर अभी एक मिनट रुक तो जाओ भाई, एक मिनट रुक तो जाओ जी। हमारा कंप्लीट हुआ है, अब इन लोग का नंबर। हाँ कब अगली डेट कब लगी है? 24 तारीख। 24 फरवरी लगी, 24 फरवरी लगी है। 24 फरवरी को आप दोनों को पेश करेंगे। इसको हम रखते हैं केस को अगले हफ्ते। लिखिएगा, श्री अंकित सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। श्री नितिन गुप्ता, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट prosecutrix is present in person. She submits that 24 February is the next date for evidence of remaining witnesses. 2 of her major material witnesses, namely Afaq Khan, AFAQ, Afaq Khan, AFAQ होगा ना? Afaq Khan, Mohammad Afaq and Mohammad Farhan are to be examined. Let these witnesses be produced before the court on 24 February positively. ट्रायल प्रोग्राम होगा, हमें नहीं मालूम, आप प्रोड्यूस करिए। Let their statements be recorded promptly by the trial court and they be subjected to cross examination if any. List this case on 27 February. चलिए। Serial number 5. Serial number 5. Your Lordship, in this matter, the registry has raised a default regarding the territorial jurisdiction of this petition. Your Lordship. पासओवर क्यों कराया था? ये बात तो फर्स्ट राउंड में भी बताई जा सकती थी अगर आप ही को अपीयर होना था तो। Your Lordship, I'll also be pressing on the interim if Your Lordship may so permit. Nothing. लिखिएगा, let default pointed out by the registry be cured within 2 weeks. List thereafter. Your Lordship, if Your Lordship may permit, Your Lordship, the petitioner had earlier referred a WP before this principal bench, and the WP ठीक है, has decided. वो डिसाइड करने दीजिए उनको। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट केस। I इस तरीके से पास ओवर नहीं होते मैटर्स जैसे आप लोग सोचते हैं। Your Lordship. Highly approached. हाँ लिखिएगा, let copy of the petition be supplied to Shri Ajat Krishna Bes appearing on caveat so that he may also file his reply within 2 weeks. List thereafter. Serial number
20. My lord, praying for next week, my lord. नहीं ऐसा नहीं होता Arguing Past- counsel is busy in court number 20, my lord. लिखिएगा in the first round nobody had appeared when a request was made by Shri Pushpendra Yadav, learned Deputy Solicitor General for Passover. In the Passover round, again time is sought on the ground that counsel is busy in some other court. Full stop. This practice is not a healthy practice. Case is adjourned, list after 8 weeks with clear stipulation that no application for preponement of hearing or urgent hearing shall be entertained. चलिए next case. One second. इनका नाम लिख लीजिएगा, आपका नाम बताकर जाइए. पवन सिंह. चलिए. My lord, during pendency of this petition, the original petition expired. Now the legal age contesting this matter. My lord. And except P5 is the order which is under challenge, my lord, by which the benefit of higher scale given to the petitioner. Original petition has been withdrawn after 3 years, my lord. This is the case, my lord. बताइएगा. My lord, and except P5 page number 20 may kindly be seen, my lord. Part of me, my lord, I am appearing on behalf of RDBB, my lord. हाँ. We recently filed the Wakalatnama, my lord. हाँ. Last date of hearing, my lord, had directed to registrar to file a affidavit in this regard. जी. So I am praying only 3 days time to, if my lord has permitted. नहीं वो तो ठीक है, परमिट तो करेंगे, कॉस्ट लगेगी. लिखिएगा. श्री संजय सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. मैं अभी वकालतनामा फाइल किया हूँ. बहुत अच्छा कि आपने बड़ी मेहरबानी करी. 2001 से आपने आज 23 साल बाद वकालत. They are counsel that, my lord. तो Reply file यू टेक एक्शन अगेंस्ट देम. इसकी कंप्लायंस क्यों नहीं 5-2 के आदेश की. लिखिएगा श्री मानस मणि वर्मा सबमिट्स दैट टुडे ही हैज फाइल्ड वकालतनामा. नहीं today. कब फाइल किया आपने? ही हैज फाइल्ड हिज वकालतनामा ऑन 17/2/2024. 16 फरवरी. इसमें तो 17/2 का लगा हुआ है. Right hand. 16 फरवरी 2024. He needs time to make compliance of the order dated 5/2/2024. 3 days I am praying. This order dated 5/2/24 was passed in presence of Sri Manas Mani Verma. Therefore, prayer for time is not genuine. Registrar shall bear the cost of this adjournment, which is quantified at rupees 5,000 to be deposited in the High Court Legal Services Committee. Subject to payment of cost, 3 days' time is granted to do the needful. That is to make compliance of the order dated 5/2/24, failing which the Registrar RDVV shall remain personally present. List this case on 23 फरवरी 2024. Oh, Wait for next week, my lord. नेक्स्ट वीक क्या होता है? तो केस आज होगा या इसको बढ़ा देते हैं? आपको करना नहीं है मुकदमा. 2003 का मुकदमा आता नहीं. सुनवाई में लेंगे तो आप बहस नहीं करना चाहेंगे. My lord, last year is क्या मैं केस क्या है ये बताइएगा. CM to record, D record is also awaited, my lord. I am praying time. फिर कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर. लिखिएगा. लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री, आपका शुभ नाम? Amit Sthapak is not ready with the matter. This case is of the year 2003. It is unfortunate that arguing counsel is seeking time. Learned counsel for the estate also prays for time to call for the DE record, which was asked to be called on 8/1/2024. There is non-compliance of order dated 5/2/2024. Neither record is available nor OIC of the case is not available, subject to payment of cost of rupees 5,000. 7 days time is granted. 6 days time is granted to do the needful. List on 26 फरवरी 2024 under the same head. रिकॉर्ड है इसमें? Yes. जी.
बताइएगा। So may I make a request at the outset? Could it come in the same heading next week? I couldn't see this file. Shri Manoj Sharma, learned senior advocate, submits that he could not prepare and place for adjournment list next week under the same head. Right. Manoj Sharma, senior advocate, assisted by मैडम का शुभ नाम डालिएगा। The last water sheet में भी से क्या मैटर क्या है देखें जरा। पनिशमेंट का मैटर है आफ्टर इंक्वायरी। None for the petitioner, despite and nobody had appeared for the petitioner on 5/2/2024 also. Next para. Looking to the fact that matter is 20 years old, petition is produced with the help of learned government advocate Shri Ankit Agrawal. Next para. Petitioner is aggrieved of the order dated 24/2/4 and appellate order dated 25/5/05. annexure. Not annexure. Being aggrieved of order dated 4/3/2004 Yes. asked by the Superintendent of Jail, Jabalpur, Yes. inflicting penalty of termination Yes, ma'am. on the petitioner on account of his overstaying on the leave. Next para. Thereafter, Out of 9 years of service, he was absent for 4 years. full stop. It is pointed out by Shri Ankit Agrawal that during the period of 9 years of his service, he was absent for a period of 4 years. When the punishment of dismissal was inflicted on him and his appeal was also dismissed by the Director General of Prisons on 25/5/2004. Full stop. 2005. 2005 है? Yes, not P21. 2004 P21 तो 2005 25 मई 2005 फुल स्टॉप। Petitioner on perusal of the petition and reply, it is evident that neither the ground of incompetency of the authority nor that of malafide has been raised by the petitioner. A regular departmental inquiry was conducted and in the departmental inquiry he was found guilty of the charge, as a result of which major penalty has been inflicted on him under Rule 10 within bracket 8 of the Madhya Pradesh Civil Services Classification, Control and Appeal Rules 1966, full stop. Thereafter, in the appeal, the appellate authority has maintained the order, full stop. On perusal of the material, it is evident that no ground is made out to show indulgence, in as much as neither the penalty can be said to be shockingly disproportionate to the alleged misconduct, where for almost half the service tenure petitioner remained absent on flimsy grounds without producing any cogent medical evidence, nor that can be said to be arbitrary. Thus, the order inflicting punishment of dismissal and that of the appellate authority cannot be said to be suffering from vice of arbitrariness or illegality calling for interference. Petition fails and is dismissed. Okay, Your Honor. In this matter also, my lord, the last order may be seen. None for the petitioner. Nobody had appeared for the petitioner on the last date. Petition is perused with the help of government advocate Shri Ankit Agrawal. Page करेंगे. This petition is filed by the petitioner claiming promotion. Over his juniors. Eh? He's seeking parity and seeking promotion from the rate of juniors. When this entire exercise has been initiated by the petitioner much belatedly, in para 3 of the reply we have mentioned that he was found unfit in DPC meeting of 17th.
this petition is filed claiming benefit of seniority and promotion on the strength of an order passed by the Madhya Pradesh State Administrative Tribunal, Jabalpur in OA number 3684/92 on 13/5/1998. Full stop. In the earlier round of litigation, petitioner had filed WP number 4710/2003, which was decided by the High Court, which was disposed of by the High Court, filed order dated 3/11/2003 in the following terms, namely, inverted commas, within inverted commas, counsel for the petitioner confine the relief at the stage in this petition for consideration of representation annexure A6, inverted commas close. Therefore, the respondents were directed to consider and decide the representation within 6 months. Thereafter, contempt petition 415/2004 was filed, and in this, reply was filed by the respondents. Full stop. Next para. The case of petitioner was considered for promotion from the post of Senior Agriculture Development Officer to the post of Assistant Director of Agriculture in the DPC meeting, which was held on 18/11, 18/11/71, 25/1/73 and 30/4/73, but petitioner was not found suitable. He never raised any grievance before any court or tribunal against his non-promotion in the year 71 and 73 and allowed his supersession to attain finality. Next para. Thus, it is submitted that petition filed seeking retrospective promotion and seniority suffers from delay and laches, and therefore, in the light of the law laid down by Supreme Court in case of Durga Devi and others versus State of Himachal Pradesh, AIR 1997 SC 2618, petition after delay of 34 years is not maintainable. Full stop. Besides this, it is submitted that the petitioner is not entitled to benefit of the order dated 13/5/1998 passed by the State Administrative Tribunal in OA 3682/1992, in as much as that order was passed in case of individual J.S. Dwivedi, and that is an order in personam and not an order in rem. Full stop. Again, there is a lapse of about 5 years in approaching the court after passing of the orders by the State Administrative Tribunal on 13/5/1998. Next para. Even otherwise, when the pleadings are perused, so also the reply, comma, once petitioner was found unfit for promotion, then petitioner was required to challenge the order of supersession within prescribed time limit, and since he has allowed his claim to lapse and thereafter did not agitate the issue in time, comma, his delayed approach to the High Court किसने बनाया ये जवाब भाई? क्या लिखा? In time will to lapse, comma, he has no High Court cannot be entertained. Next para.
law laid down by Supreme Court in Durga Devi Supra is to the effect that a judge cannot draw inferences in regard to comparative merits of candidates and fitness for post. It is function of duly constituted selection committee, and since tribunal cannot sit as an appellate court and quash selection by itself, scrutinizing comparative merits of candidates, the order passed by the state authorities judging the comparative merits and finding the petitioner to be not suitable, will be applicable to the facts and circumstances of the case, and therefore no indulgence is required in absence of there being any allegation of malafide or arbitrariness in the conduct of the DPC. Full stop. Petition fails and is dismissed. None for the petitioner. Petition is perused with the help of Shri Ankit Agarwal, learned government advocate. बताइएगा। Lord, इसमें they were earlier working with the private respondent हाँ number 5. ठीक है, उनके absorption पे अब lower post पे कैसे करेंगे absorption? Lord, lower post पे नहीं था, Lord, they had only given an undertaking to be absorbed as per the policy that we have also filed, my Lord. जी. This is part of para number 5, my Lord. जी. बढ़िएगा. 4 and 5. किस पद पर कार्यरत थे ये? Lord, originally they were working as teachers in the private society. हाँ ठीक है. फिर शिक्षा कर्मी के पोस्ट के लिए even undertaking to be absorbed on the pay and scale available. कहाँ है वो undertaking? Yes, my Lord. That is, my Lord, is there as annexure. This is agreement and samiti का प्रस्ताव, my Lord. Annexure? R1, my Lord. R1. पढ़िए. कहाँ लिखा है इसमें? But this is part of the prastav. I'll just point out where it is. जी पढ़िए. Now, this has been signed by both the parties, my Lord. अरे वो तो ठीक है, वो कहाँ है कि ये लोअर पोस्ट पर एब्जॉर्प्शन की सहमति दे रहे हैं? इसमें समिति का बैठक के बिंदु क्रमांक, my Lord, it's 6. 6 पढ़िए. कार्यक्रम का संविलियन शासकीय सेवा में उस दिनांक से मान किया जाएगा। देखिए, शाला में सृजित पद से अधिक नहीं है, इस हेतु संस्था अध्यक्ष घोषणा पत्र लगने, समस्त कर्मचारी की न्यूनतम मात्रा रखने की, समस्त योग्यता प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश, स्वीकृति पद आदेश है। कोई भी कर्मचारी शाला शासनाधीन हेतु बजट प्रावधान के 9 वर्ष से 4 वर्ष पूर्व तक कार्यरत हैं। बिंदु क्रमांक 6 पढ़ रहे थे ना? My Lord, this is if in the next page it is, my Lord. पेज नंबर? This is page number 8. 8? My Lord has R1, my Lord. हाँ, R1 का 8 पढ़िए। हाँ, my Lord, it's the कार्यरत basic कर्मचारी conditions का have been संविलियन mentioned. शासकीय सेवा में उसी दिनांक से मान्य किया जाएगा जिस दिनांक से विद्यालय शासन एवं पद की सेवा में वरिष्ठता के लिए मान्य नहीं हो, पूर्व की सेवा। Yes, ma'am. इसमें ये कहाँ लिखा है कि आप किसी भी पद पर उनका संविलियन कर देंगे? आपने लिखा है कार्यरत कर्मचारी का संविलियन शासकीय सेवा में उसी दिनांक से मान्य किया जाएगा Yes, ma'am. जिस दिनांक No, से all विद्यालय। these are conditions. हैं? All the conditions. 6 is one condition. नहीं, आप तो ये बता दीजिए ना, absorption on a lower post was one of the conditions and you were entitled to reduce their pay scale. Yes. कहाँ लिखा है ये? None for the petitioner. Respondent counsel is
unable to point out from the return that there was any undertaking for absorption on a lower post. एक second. Full stop. Let proceedings of absorption be produced to point out that what were the terms and conditions for absorption and what were the qualifications. My lord, if I'm हाँ, कॉलम 8 में दिया हुआ है. page 11. हाँ, उसमें क्या दिया हुआ है? लॉर्ड बिंदु क्रमांक 2, यदि संस्था अनुदान प्राप्त संस्था है तो संबंधित कर्मचारियों के संविलियन करने के पूर्व उन्हें अंडरटेकिंग लिया गया है कि कम वेतन प्राप्त होने की दशा में उनके द्वारा न्यायालय में कोई विवाद दायर नहीं किया जाए. उससे क्या होता है? Can you stop it? Can there be a stopple in law? My lord, but they का have, जवाब तो दीजिए. we'll produce a record. हाँ, let affidavit of the commissioner. The school education be filed in this behalf as to under which provision of the Commissioner Tribal Development and Welfare be filed in this behalf as to under which provision of law they could reduce the pay scale and the change the nomenclature of the post on upon absorption of a DP Mishra Education Society, Chaurai District, Chhindwara with the government. Let affidavit be filed within 4 weeks. List in the week commencing 3 weeks कर दीजिए. List on 11 March 2024. Respondent state is also directed to produce the complete original record of absorption. Serial number 1. वो तो आती ही नहीं. None for the petitioner. Shri Atul Dwivedi for the state. With the consent and help of Shri Atul Dwivedi, case is perused. Petitioner's contention is that petitioner's date of birth has been wrongly mentioned as 1/1/1941 in place of 11/1/1941. Full stop. A dispute has been raised by the petitioner by filing this writ petition after attaining the age of superannuation, claiming direction to the respondents to produce the copy of the inquiry report of the respondent number 2 and his age determination with regard to the petitioner's wrong date of birth as 1/1/1941, and it is further prayed that petitioner's correct date of birth, that is 11/1/41, be written in certificate issued by the joint director and consequential benefits be given to the petitioner. Next pair. I have perused the record. The state has not filed any reply. आपने कोई जवाब नहीं पेश किया ना? हैं? जवाब नहीं है सर. हाँ, state has not bothered to file any reply. However, law in this behalf is crystal clear. Such bogey of incorrect date of birth cannot be raised at the fag end of the service career or after retirement. In this regard, please have reference to the judgment of Supreme Court in dash judgment दिखा दूंगा. ठीक है ना? Thus, petition being devoid of merit deserves to fail and is hereby dismissed. My lord, requesting to list this matter next week. श्री, आपका शुभ नाम बताइएगा. Kuldeep Rathore. Kuldeep Rathore. submits that this matter be taken up next week. क्या हो गया? क्यों next week क्यों चाहिए? A senior is before the another council. As the arguing counsel is before another court. Case is adjourned. List after 4 weeks. Serial number 1. Also in this case, petitioners were appointed on the post of Samhita Sala Shikshak grade 2
जी Thereafter, Your Lordship, one Kumari Bharti Nayak had challenged the appointment of the petitioner जी by way of appeal before the collector. जी Your Lordship, collector has quashed the appointment of the petitioner and others. जी Thereafter, Your Lordship, petitioner and others had challenged the order passed by the collector before the commissioner. जी Your Lordship, Commissioner Sagar Division Sagar has affirmed the order passed by commissioner. जी Thereafter, Your Lordship, order passed by collector and commissioner bear challenge before this Honorable Court by way of various writ petitions. जी And Your Lordship, in the similar petition, order passed by the collector has been quashed by this Honorable Court and remanded the matter before the collector. दीजिएगा. Petitioner's contention is that his case is squarely covered by an order of coordinate bench dated. डेट क्या है इसकी? तो खाली डेट पड़ी आपके टाइपिस्ट से कॉपी निकलवा लाए. नहीं सर, वो कंप्यूटर से निकलवाया सर. कंप्यूटर में डेट क्यों नहीं आई है? उसके लास्ट में डेट देख लीजिए. पास्ड इन WP विद इन ब्रैकेट S नंबर 13173/2004 विवेक खरे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड अदर्स whereby the coordinate bench has quashed the orders dated 12/11/2002 passed by the collector and remitted the matter to the collector Tikamgarh for. ये भी टीकमगढ़ का ही है. जी सर, सेम ऑर्डर है, वही ऑर्डर, सेम ऑर्डर का एग्जैक्टली. लास्ट पैराग्राफ लिखिए म्यूटेटिस मुटेंडिस. चलिए अतुल द्विवेदी का नाम डाल लीजिएगा. रिस्पोंडेंट स्टेट. My lord, kindly 2 weeks time may be granted me. काय के लिए? Because my lord, senior counsel Mr. Trivedi had been engaged by the फिर for taking काउंसिल का तो एंगेजमेंट केस के लिए होता है. Instruction. डेट के लिए for taking instruction in this case. किसका क्या इंस्ट्रक्शन? Petitioner से sir. सही है. थोड़ा देखते ना. 2004 का एडवर्टीजमेंट चैलेंज किया है इन्होंने। आज क्या होना है? सब इंफ्रक्चर हो चुकी है कहानी. 42 इयर्स के पहले ही थे। हाँ रिटर्न भी पेश नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं. रिटर्न पेश है इसमें. रिटर्न है। हाँ इस केस को दूसरी जगह ले जाइए. लिखिएगा श्री आपका मुकेश पांडे. मुकेश पांडे प्रेस फॉर टाइम. लेट दिस केस बी लिस्टेड बिफोर अनदर बेंच इन विच मेरा नाम लिख के इज नॉट अ पार्टी. Obvious. So this WPS has been rendered infructuous. लिखिएगा. मैडम का शुभ नाम लिखिएगा. Anshika Ram. Anshika Yadav submits that this petition is rendered infructuous. Accordingly, it is dismissed as infructuous. So the petitioner has died and there are no legal recourse. हाँ ठीक है, ठीक है. Petition number 130 in books में रिकॉर्ड है इसमें. जी है हाँ अवेलेबल। हाँ ठीक. My lord, this petitioner was working on the post of record keeper, your lordship. जी जी He was directed to officiate on the post of sub-registrar, your lordship. जी. And during that period, your lordship, he was suspended जी so that he has submitted an application before Annexure P2, your lordship. एक मिनट रुकिएगा प्लीज. Annexure P2. Yes, my lord. जी क्या है ये? He has submitted, your lordship, his representation and stated that, your lordship, कि उसने जो भी डॉक्यूमेंट उसको रजिस्टर्ड करने के लिए दिए गए थे वो सभी उसने रजिस्टर्ड किया है. इसमें कुछ उसने किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया है, योर लॉर्डशिप. जी जी और
during the period of suspension, Your Lordship, he was not given the substance allowance, Your Lordship, so that he could not participate अभी in तो the. कंपल्सरी रिटायरमेंट की बात हाँ, my lord, that is Annexure P16, Your Lordship. हाँ P16 में Your Lordship उसको इन्होंने, हाँ क्या पढ़िएगा my lord, 28/3/2001 को Your Lordship, जी आरोप क्रमांक 1 कलेक्टर खंडवा द्वारा श्री एस के पारासार रिकॉर्ड कीपर. जी I was posted on the post of record keeper, but he was taken the work of sub registrar, Your Lordship. जी जी And- दोनों क्लास 3 पोस्ट है हाँ, clerical job. क्लरिकल पोस्ट है Yes, my lord. हाँ आरोप क्रमांक 1 एस के पारासार रिकॉर्ड कीपर निलंबित वर्ष 1998-99 उपपंजीयक खंडवा के प्रभार में रहे. उपपंजीयक खंडवा को वर्ष 1998-99 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 313 लाख के विरुद्ध 236.52 लाख रुपए आय प्राप्त की गई, जो कि 76.48 लाख कम है तथा वर्ष चार्जशीट हो गई. माय लॉर्ड. वेयर इज द इंक्वायरी रिपोर्ट? जी P14 जी इसकी फिर अपील की होगी आपने? माय लॉर्ड, उस अपील में क्या हुआ? अपील भी खारिज कर दी उद्देश्य. जी इंक्वायरी में कितने चार्ज प्रमाणित पाए गए? इसमें सभी तो चार्ज प्रमाणित हैं आपके खिलाफ. जी फिर सर, ये टर्मिनेशन चाह रहे थे कि आप कंपल्सरी रिटायरमेंट से संतुष्ट नहीं है? माय लॉर्ड, ड्यूरिंग पहली बात तो हम रिकॉर्ड कीपर थे सर. रिकॉर्ड कीपर को आपने ऑफिशिएट कराया. ऐसा बताइए ना नियम में. यहाँ से फिर बहस शुरू करिए वकील साहब जी. कि रिकॉर्ड कीपर को उप पंजीयक का चार्ज नहीं दिया जा सकता था, इसलिए जिस कार्य को करने के लिए आप जो है उत्तरदायी नहीं थे वो कार्य आपसे कराया गया. ऐसा बताइए रिकॉर्ड में से देख के. हमारा यही कहना है सर. नहीं नहीं आपके कहने से नहीं होता. हमने पिटीशन में लिखा है अरे सर. वकील साहब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एक मेमो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का. उसमें लिखा रहता है कि किसको क्या काम दिया जाएगा और उस व्यक्ति की एब्सेंस में वो कार्य किस व्यक्ति को दिया जा सकता है. हमने इसीलिए लिखा है सर. अरे भाई जैसे चपरासी को नहीं दे सकते उपपंजीयक का काम, लेकिन रिकॉर्ड कीपर को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ऐसा देख के बताइए. आप नियम से बात करिए, ऐसे हवा में बात करने से थोड़ी ना होगी. इसमें सर एनेक्जर P15 जो विभागीय जांच आप कुछ जजमेंट उसमें मैंने तैयारी की, आपने कोई जजमेंट लेकर आए कंपल्सरी रिटायरमेंट के ऊपर? सर अभी तो नहीं लाए हैं. तो फिर क्यों आए हैं आप? टाइम खोटा करने के लिए कोर्ट का? श्री शुभ नाम बताइए आपका? भूप सिंह. भूप सिंह is not ready with the matter. He is not in a position to substantiate his argument that substantive post of the petitioner was that of record keeper and he could not have been given charge of the sub registrar stamps and registration, so to make him liable for the lapses which have been pointed out in the charge sheet and in regard to which inquiry officer has proved the charges. Full stop. He is also required to demonstrate that this defense was taken by him before the inquiry officer and also at the time of filing his brief after completion of the departmental inquiry. He has also not brought any judgments in support of his contention that how punishment of compulsory retirement is bred in law. He prays for कितने समय में इकट्ठा कर लेंगे आप? 2 week time. Prays for and is granted 2 weeks time to do the needful list after 2 weeks. चलिए.
आपका जवाब वगैरह नहीं आया इसमें? जवाब सर इसमें नेट पे हैं? क्यों नहीं आया जवाब अभी तक? सर नेट पे नहीं दिख रहा है सर। नहीं, नेट पे तो हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तो आपसे पूछ रहे हैं। आपकी फाइल में लगा है क्या? None for the petitioner. State has not bothered to file reply till date. एक्चुअली सर वो कंप्यूटर कॉपी है इसमें। जी, और जवाब आया क्या? State has not filed reply till date, though notices were issued on 15/3/2005. Thus, for over 18 years, state has not bothered to file reply, subject to cost of rupees 15,000 to be recovered from the erring official. 2 weeks' time is granted to file reply, failing which respondent number 3, Chief Executive Officer, Jila Panchayat Umaria, shall remain personally present. List on 11 March 2024 under the same head. Petitioner claiming two relief quality of promotion जी, and seniority. and seniority. जी, Well, he's so throughout senior to the respondent of court. respond number 4. बताइएगा. May kindly see मतलब P2. This P2. is my appointment order जी, after selection. जी, just My name is at number serial number 1. संजय कुमार शर्मा. Yes, sir. जी, And the respondent number 4 is number 13. It is maintained throughout. एक सेकंड. 13 Yes, madam. अजय कुमार पंडित. Yes, madam. जी, एक सेकंड. ये कब का? 17/12/1982 का है अपॉइंटमेंट ऑर्डर. No, no, 91. है? इसके ऊपर डेट देखिएगा. P2 में डेट क्या लिखी हुई है? 92, 17/12/92. Yes. And my seniority was maintained. एक When I सेकंड. filed a Petitioner petition. was placed at serial number 1 and private respondent at serial number 13. जी, फिर Then my अपॉइंटमेंट है आपका. Then I took guarantee. एक सेकंड. Platoon commander, on the post of platoon commander. जी, फिर Well, this my seniority was maintained throughout. जी, Then I have claimed my the petition I filed जी, that I should be granted the seniority with effect from 15/1/92 किस ग्राउंड पर? on the ground that I have joined the training on 15/92 and that is why my lord, from the date of joining I should be given. The honorable court directed to consider my. बताइए कहाँ रूल्स, कहाँ सीनियरिटी के लिए? वेयर आर दी रूल्स? वही है हमारा. हैं? यही कल हाँ, यही लगता तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग से है. वही तो हम पूछ रहे हैं, कहीं नहीं है इनके. नहीं नहीं, इनके नहीं है, आपने मांगा, आपको तो मालूम होगा. इनने लिखा है ना. नहीं, बाकी लोगों को 15/92 से दे दी क्या सीनियरिटी? नहीं, 15/92 से नहीं. वो इशू तो खत्म हो हमने गया. मांगा है. अरे आपने मांगा तो ग्राउंड तो बताएंगे आप. The ground is from the date of joining. नहीं नहीं, My seniority will be counted on the date I have joined अच्छा ज्वाइंट है. joined the training. हाँ, कहाँ है आपका When I was अपॉइंटमेंट ऑर्डर? पढ़िएगा जरा फिर से एक बार थोड़ा सा. क्या मतलब P2? P2 पढ़िएगा. P1 क्या, पहले P1 पढ़िएगा. Yes. सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में प्रशिक्षण सत्र में प्रवेश. Yes. आपको प्लाटून कमांडर 15/92 को इन्होंने एक मिनट ट्रेनिंग में भेज दिया. हाँ हाँ, आपको बजे उपस्थित हो गए. निर्धारित समय और दिनांक को उपस्थित न होने की. निश्चित से महिला इंदौर के समय उपस्थित होने, निर्धारित समय दिनांक को उपस्थित न होने की दशा प्रशिक्षण आदि निरस्त कर दिया. आप किस पद पर कार्य कर रहे थे उस वक्त? प्लाटून कमांडर. नहीं नहीं, Selected for platoon commander. अरे भाई, you were selected for platoon commander. Yes. Whether it is a post of direct recruitment Yes. or Yes. where is it mentioned?
It is not in dispute. अरे एक मिनट रुक तो जाइए भाई, आप इस तरह के आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रावधान कहाँ है आप। It is not in dispute. That's why it is not necessary. अच्छा, प्लाटून कमांडर के अपॉइंटमेंट के कहाँ है, रिक्रूटमेंट रूल्स में कहाँ प्रावधान है बताइएगा। चलिए, where is the provision for recruitment of a platoon commander in the recruitment rules? Please show me the recruitment rules. पायलट वो तो झगड़ा ही नहीं है इसमें। अरे नहीं होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे को इतना तो समझा दीजिए, हम कम समझते हैं। आई एम नॉट सो ब्रिलियंट एज यू आर। Then I will have to bring the appointment. नहीं होगा ना इसमें, नहीं है इसमें। लिखिएगा। Petitioner's counsel, after arguing for some time that he is entitled to seniority with effect from 15/1/1992 in terms of the communication dated 3/1/1992, whereby he was called for training to the post of platoon commander and had submitted his joining on 15/1/92 and not from the date of his appointment, which is 17/12/1992, Annexure P2, when on completion of successful training he was given appointment as platoon commander, comma, when this court requested him to point out from the recruitment rules meant for appointment of a platoon commander, submits that they are not on record and that is not the controversy. Full stop. Next paragraph. As per the understanding of this court, seniority can be reckoned from the date of appointment. Whether training preparatory to appointment will be part of the can be treated to be a part of the appointment or not is to be ascertained from the recruitment rules in this behalf. Shri D.K. Dikshit prays for time to bring on record the recruitment rules in this behalf. My lord, may kindly see para 5 of the return. They themselves are admitting that Rule 12(1) will apply of the general condition of service. तो वो अगर उतना ही हमें सरकार के ऊपर ही चलना होता तो फिर हमारे यहाँ बैठने का कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर they themselves are saying that the rule will, the general condition of I'm aware of this fact that how replies are made. लिखिएगा। I will produce. हाँ। After 2 weeks लगा। मतलब one more thing मतलब I'm requesting. हाँ। मतलब हमने ये 1997 के रिक्रूटमेंट रूल्स है ना? वो बाद में आए हैं, हम तो 91 के अपॉइंटी हैं। हाँ ठीक है, उसके पहले कौन से रूल्स है? 97 में इनका रूल्स का कहना है कि उस दिन से देने को कहा है 97 रूल्स में जिस दिन ट्रेनिंग में एंटर हुए, उसके पहले नहीं था। नहीं, इसके पहले कौन से रूल्स है? 97 के पहले जब आप भर्ती हुए पहले यही लिखा उन्होंने, वो रूल थे जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स। नहीं, जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स डिटरमिन इंटर-सी सीनियरिटी, दे विल नॉट रिप्लेस द रिक्रूटमेंट रूल्स. You are required to show from the recruitment rules that what was the provision in regard to appointment of a they themselves are saying that the general condition of rules will apply for the seniority. चलिए आप गलत कोर्ट में खड़े हुए हैं, चलिए देखेंगे उस वक्त रिक्रूटमेंट रूल्स आने दीजिए. Let recruitment rules be brought on as they were in. One thing more. I have also claimed promotion. सब मिलेगा ना, सीनियरिटी मिलेगी तो प्रमोशन मिलेगा. जी, इन्होंने अपने उसमें रिटर्न में लिखा है कि साहब इनके पास इंक्वायरी थी, वो अभी कंक्लूड नहीं हुई है, इसलिए इनका प्रमोशन नहीं हुआ, इनका वो लिफाफे में बंद है. तो मैं काइंडली ऑर्डर टू इन्फॉर्म द ऑनरेबल कोर्ट. बुला लेंगे, लिखिएगा. They are very well aware about what has happened in the inquiry. अरे आपको भी तो मालूम होगा ना, आप बता दीजिए ना. आप दोनों एक जैसी बहस कर रहे हैं, एक ही लेवल की बहस कर रहे हैं. At this stage, Shri Dikshit submits that petitioner was denied petitioner's case for promotion was kept in a sealed cover on account of pendency of a departmental inquiry. Shri Sahu will bring on record the outcome of the inquiry. 3 weeks. 2 weeks. List on 4 March 2024. क्या हो गया? शिवरात्रि तो 8 तारीख को है, आप 4 तारीख से थोड़ा ना मनाना शुरू कर देंगे. चांसेस तो नहीं है, मगर मैं आई विल बी आउट. अगर आप आउट होंगे तो बता देंगे ना. पंडित जी लोग 15 दिन पहले से कर लेते. 6-7 कर दीजिए उसमें. मैडम आपके गलत आरोप लगा देंगे, ये कास्टिस्ट होने का आरोप लगा देंगे, विच वी कैन नॉट अफोर्ड. मतलब 12 लगा दिए. चलिए 11 तारीख 11 मार्च 11 मार्च. ठीक है, लिस्ट ऑन 11 मार्च under the same head.
मतलब we are not pressing for it, my lords. देखिएगा, आपका नाम ही नहीं डालूंगा मैं, मिस ऋतु झंझानी सबमिट्स दैट। मैं इसलिए नहीं बिकॉज वकालत नहीं, कोई बात नहीं, इसके सीनियर एडवोकेट का तो वकालतनामा होता ही नहीं, नहीं। मेरा नहीं, उस वक्त में नहीं थी सर। हम तो आपको जब से प्रैक्टिस में आए तब से डीम्ड सीनियर मानते हैं। Stand advice to my lords. Ritu Jhanjani prays for withdrawal of this petition. Accordingly, petition is disposed as withdrawn. Grateful. Number 1. Milord, this is the petition whereby initially I was punished with the punishment of compulsory retirement. रिकॉर्ड है इसमें? रिकॉर्ड नहीं है सर। रिकॉर्ड बुला लीजिए, देखिएगा। श्री डी.के. दीक्षित, लर्नेड सीनियर, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री सौरभ सोनी prays for time to call for the record of the departmental inquiry. Let record be called for within 2 weeks, list thereafter. In the week commencing 11 March 2024, under the same head. None for the petitioner. Case is about 19 years old and nobody is appearing for the petitioner. This writ petition is filed being aggrieved of the orders dated 16/2/2005 and 26/4/2004, whereby respondent number 2 refused to initiate action against respondent number 3 for committing misconduct of plural marriage. Full stop. Petitioner also sought a writ in the nature of mandamus, directing respondent number 2 to advert to the complaint made by her along with her affidavit and call for an explanation for the respondent number 3. Next para. IPC दीजिएगा. The state has filed a reply respondents have filed a reply, and in the reply they have taken a categorical stand that as per the departmental records, marriage of the respondent number 3 was solemnized on 29th January 1997 with Miss Chitra Lodh, daughter of Shri B.C. Lodh, in accordance with Hindu marriage rites and customs. On application from the respondent number 3, name of Srimati Chitra Bardhan was entered as next in of the respondent number 3 in his service book. Thereafter, he had brought to the notice of his employer, that is respondent number 2, that his marriage with Miss Chitra Lodh had broken down, and wide orders dated 6th March 2002 passed by the learned 4th additional district judge to the district judge Jabalpur. He was granted a divorce in accordance with section 13 within bracket 1 another bracket Roman 1 of the Hindu Marriage Act 1955. On his request, accompanied by the copy there of the order, his service book was amended and name of Srimati Chitra Bardhan was deleted and name of the mother of the respondent number 3, Srimati Meena Bardhan, was entered as next kin. Next. Thus, in view of the said facts,
and looking to the fact that there was an order of the competent court dated 6th March 2002 dissolving the marriage of the petitioner with the respondent number 3, comma, dismissal of the petition was sought. Next para. When the petition is perused, so also the reliefs claimed therein and the reply filed by the respondent in showing that divorce had already taken place in 2002. Then, in light of such facts and the order of divorce issued by the competent court, comma, it is evident that there is no substance in the petition and it is nothing but a harassment petition filed to settle personal scores. Next para. After a divorce decree, a person is always free to challenge the to contract second marriage unless and until that divorce decree is stayed by the appellate court, but no such material is available on record to show that the decree of divorce dated 26/3/2002 was ever stayed. Therefore, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. Number 142. Done करके लिखिएगा. Lordship, with due respect, Lordship, Mr. Manish Saini's uncle passed away day before. लिखिएगा. Shri SP Rai submits that there is bereavement in the family of Shri Munish Saini. He prays for listing of this case next week. List this case next week under the same head. Serial number 43. None for the petitioner. Petition is perused with the help of learned panel lawyer Srimati Sonali Vishwas. Next para. Petitioner has filed this petition challenging the action of the respondents in removing the petitioner from the post of Guruji and thereafter the challenge which was made before the additional commissioner in appeal, that is the order of the appellate authority dated 5/4/2003 annexure P8. Full stop. नहीं sorry एक सेकंड उल्ट ऐसा काटिएगा. Petitioner who was working as Guruji was removed from service by the Chief Executive Officer Janpat Panchayat JC Nagar by order dated 19/7/2002. Against this order an appeal was filed before the collector, additional collector Sagar. Next para. By order dated 5/4/2003, additional collector Sagar has noted a fact that as per the scheme of education guarantee, second Guruji, only out of 2 Gurujis, one is to be a woman. Full stop. Chief Executive Officer Janpat Panchayat JC Nagar in his communication had mentioned that in the year 1997, one Shri Kailash Singh, son of Niranjan Singh, was working as Guruji with effect from
14/8/1997. Therefore, thereafter, appointment of Kailash Singh was cancelled, against which petition was filed, and he was given a reappointment on the post of Guruji, full stop. Since his services were reinstated and he was working prior to the date of appointment of the petitioner, and second post was required to be filled from amongst a women candidate. Therefore, appeal filed on behalf of the petitioner was rejected. Next para. Against this order, petitioner had filed appeal/revision before the Additional Commissioner Sagar, which too has been rejected by order dated 23/12/2004, as second appeal was held to be not maintainable. Next para. State has filed respondent number 2 has filed a return, and in its return it is categorically mentioned that the orders passed by the additional collector and the additional commissioner are in consonance with the scheme of EGS, and therefore second male member could not have been appointed as Guruji. Removal of petitioner from the post of Guruji in view of reinstatement of the first Guruji cannot be faulted with, full stop. I have gone through the orders, impugned, and do not find any illegality in the same. Calling for interference, petition fails and is dismissed. As there is no violation of the terms and conditions of the policy, and petitioner could not establish his preferential claim on the post of Guruji being a male member in preference to a lady member. Chaliye. Serial number 144। मैंने इसमें भी रिकॉर्ड बुलाया है। क्या हो गया? डीपीसी रिकॉर्ड और रिव्यू डीपीसी रिकॉर्ड बहुत पुराना ऑर्डर है। नहीं तो पहले आप तो बताएं कि क्या केस है आपका, फिर कंसीडर करेंगे, बुला लेंगे। हमारे SCR कभी मिली नहीं। हाँ। और उसके बाद हमको सुपरसीड कर दिया। कहाँ है वो रिकमेंडेशन? वेयर इज दैट ऑर्डर ऑफ सुपरसेशन? कब सुपरसीड हुए थे आप? कब सुपरसीड हुए थे आप? बता रहा हूँ 97 में। P13 यस। उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भ पत्र का अवलोकन करें। पिटीशन सो सी के आनंद विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित दिनांक 12/7/2004 सहायक जिला उन्हें दिनांक 10/9/97 से सहायक जिला अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने संबंधी प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण किए जाने के निर्देश दिए गए। श्री सी के आनंद द्वारा इस विभाग में दिनांक 25/4 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उन्हें 10/9/97 से जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। आबकारी उप निरीक्षक से सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर 5/8/97 को संपन्न प्रगति समिति की बैठक में चयनित किए गए आबकारी उप निरीक्षकों को सहायक जिला आबकारी के पद पर पदोन्नति आदेश 10/9/97 द्वारा जारी किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12/7/2004 के परीक्षण सी के आनंद सहायक जिला आबकारी को दिनांक 10/9/97 से पदोन्नति संबंधित दिनांक 5/8/97 को आयोजित व्यापक परीक्षा में लेट रिकॉर्ड ऑफ द रिव्यू डीपीसी बी कॉल्ड फॉर। रिव्यू बोथ वाले दोनों बुला लें। क्या करना है? मेन डीपीसी और रिव्यू डीपीसी। मेन डीपीसी एंड रिव्यू डीपीसी बी कॉल्ड फॉर। ये रिक्वेस्ट लेट रिकॉर्ड बी कॉल्ड फॉर विद इन 4 वीक्स लिस्ट देयर आफ्टर। जी मतलब वन मोर रिक्वेस्ट। हाँ मतलब जो प्रीवियस केसेस में आपने 11 तारीख लगा दी। हाँ फिर 11 उसको 18 कर देना। नहीं फिर तो छुट्टी लग जाएगी होली की, फिर आप होली के रंग में आ जाएंगे। नहीं आएंगे। उसको 11 तारीख को इनके 11 से हटाकर 22 अप्रैल कर दीजिएगा। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ श्री दीक्षित एज ही इज नॉट अवेलेबल बिफोर दैट,
list in the week 22 commencing अप्रैल 22 अप्रैल। 22 अप्रैल से तो छुट्टी पर नहीं है आप। चलिए शादियां हमारे तो चलिए कोई बात 8 तारीख की और 11 तारीख हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो 22 के पहले लगा दी, मेरे को नहीं दिक्कत नहीं नहीं। आएगा, उसके पहले सोमवार उपलब्ध नहीं है, चलने दीजिए। तो दोनों केसेस में करने वाले 138 एंड 140 ब्लड। बताइएगा। लिखिएगा। This writ petition is filed being aggrieved of the order dated 22/3/2003 passed by the Labour Court Riva in case number 291/MPIR-A/99 and thereafter the order dated 26/3/2004 passed by the London Industrial Court Riva in appeal number 150/MPIR/2003 whereby direction of the Labour Court to permanently classify the workman Motilal Yadav has been affirmed by the London Industrial Court on इसकी फाइल नहीं आ पाई थी मेरी। हमने तो पढ़ लिया ना, आपकी फाइल तो आएगी भी नहीं। चलिए फुल स्टॉप। I perused the impugned orders. Though Shri Manasmani Verma submits that impugned orders are arbitrary and cryptic, but there is no material available on record to substantiate the same. Full stop. Orders have been passed after due appreciation of law and the provisions contained in this behalf. There is no illegality in the said orders calling for interference. Petition fails and is dismissed. In this case, my lord, Honorable Court has granted stay on 6/9/2005, my lord. हाँ आज सुन लेते ना उसको। In subject of 17B, my lord. हाँ 17B की कंप्लायंस हो गई। अब वही मैं पता करने के लिए प्रार्थना कर रहा नहीं अभी कहाँ से पता करेंगे? नेक्स्ट वीक रख लें साहब। आज लगा तो है मुकदमा। नहीं वो कल पता करके आ जाइए, कल रख रहा हूँ उसको टॉप ऑफ द लिस्ट। श्री Manasmani Verma prays for time to bring on record compliance of section 17B, a condition on which a coordinate bench of this High Court had granted stay on 6/9/2005, making it clear that unless compliance of 17B is made within 4 weeks, interim order shall stand vacated. Full stop. Let compliance be brought on record by tomorrow. List on 21 फरवरी 2024, top of the list. सभी 9-10-23 का भी ऑर्डर था, रिकॉर्ड मंगाया था। आप बुलाया होगा आपने, ठीक है। आपने मंगाया तो नहीं आएगा, बुला लीजिए, सब बुला लीजिए। In the meanwhile, registry is directed to make compliance of the order dated 9/10/23 if not already complied with. Number 150. लिखिएगा none for the petitioner.
This petition is being filed being aggrieved of the orders of the Sub-Divisional Officer Revenue, Tehsil and District Raisen and the orders of the Additional Commissioner Bhopal Division Bhopal, whereby the orders of the Tehsildar under Section 129 MPLRC have been set aside, holding that demarcation was not properly carried out. This order was affirmed by the Additional Commissioner in appeal. Next para. In view of the concurrent findings of fact, petitioner has a remedy to apply for fresh demarcation and on the basis of that demarcation to proceed in accordance with law. With the aforesaid liberty, petition is disposed of. Lordship, I'm playing 1 week time to comply the last order. Ji, To file the compliance report. Shri, none for the petitioner. Shri Atul Dwivedi prays for and is granted 7 days time to bring on record the compliance report list on 26 February under the same head. इसके बाद सीधे ये लीजिएगा Lordship, 1 सितंबर 2023 week's time to file compliance report. क्या हो गया 1 सितंबर 2023 कोई 26 कंप्लायंस रिपोर्ट 26 तारीख को लगा दीजिएगा. चलिए This is a case wherein the pay scale of the petitioners have been reduced, my lord. Now, my lord, they have filed the return, my lord, and I would rely upon their own return, my lord. May come to annexure R1. Just a minute. R1. Page 6 of the return. It is in respect to one Puran Singh. है? Puran Singh. नहीं R1 तो क्या है? जगदम्बा प्रसाद. हाँ, ये कार 99 item number 99. Sorry, 100 खुल गया. I'm sorry. Their return, yes. My lord, may come to annexure R1, my lord. It is in respect of one petitioner, Puran Singh. जी. Now, my lord, may kindly see, my lord, प्रथम नियुक्ति का दिनांक 1/11/93. हाँ. ना प्रथम धारित श्रेणी अकुशल इन्होंने 16 वर्ष काम किया है, तो 80 रुपए के हिसाब से जो इंक्रीमेंट बनता है 16 वर्ष का तो 1280 होता है. और 6 वर्ष का क्योंकि कुशल श्रेणी में काम किया है तो 100 रुपए के हिसाब से 600 बनता है. तो उसके हिसाब से 58 उसके हिसाब से सर 5900 रुपए आता है बेसिक पे. आप तो बताइए आप जो हैं कब नियुक्त हुए अकुशल में और कब कुशल में क्लासिफाई हुए? My lord, may kindly see, my lord, the pay scale which was granted to us. Annexure P1 पहले ये बताइए आपका अपॉइंटमेंट कब का है, किस श्रेणी का है? My lord, initially we were appointed as this unskilled laborer. कहाँ है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर? वही तो पूछ रहे हैं आपसे, थोड़ा दिखाइए तो प्लीज. Where is that appointment? Where is they themselves? अच्छा ठीक है. Where is the order of your classification as a regular or as a skilled laborer? My lord, that is annexure. This is in person. This is my lord. अरे वकील साहब. My lord, I am just P2 page 23. हाँ, P2 page 23 दिखाइएगा. स्थायी कर्मी घोषित किया जाता है. स्थायी कर्मी घोषित किया जाता है. मैंने सवाल क्या पूछा था? परमानेंट. मैंने पूछा कि आपका परमानेंट क्लासिफिकेशन अकुशल से कुशल में कब हुआ? वो सर वो एक्चुअली क्या है सर, हमने कुछ वर्ष अकुशल में काम. वही दिखा दीजिए ना मुझे, वही तो कागज पूछ रहा हूँ मैं आपसे. सर उसके लिए तो फिर मेरे को बुला लीजिए. श्री सबके लिए रजनीश गुप्ता, when asked by this court that when was he classified as a skilled laborer, so to take benefit of the orders contained in annexure R1, he prays for time to bring on record permanent classification order in the category of a skilled laborer on record. कितना समय चाहिए आपको? 15 दिन का. He prays for and by way of last indulgence 2 weeks time is granted to bring on record classification order as a skilled laborer. चलिए. सर इन्होंने तो किया है सर. अरे इन्होंने किया होगा भाई, ये इनके करने से फिर हमारी जरूरत क्या है? इन्हीं से जाके कराना. इन्होंने सर सॉरी
ये सब नहीं। सर कोई वीक कमेंसिंग दे दें आफ्टर 15 डेज। हाँ ठीक है ना, लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 4 मार्च 2024। सर 4 उसके बाद दे दें सर, 4 को बिकॉज 11 मार्च कर हाँ दीजिए। 11 आई एम It is made clear if the document is not brought on record, then petition may face the consequences. नहीं मैं कर चलिए। Serial number 102 मैलर्ड इसमें जो है रिट अपील पेंडिंग है मैलर्ड। मैंने अभी सरकारी वकील साहब से कंसीडर मतलब काय की रिट अपील पेंडिंग है? These are the order, मतलब जो ऑर्डर 60 से 62 का हो गया सर, क्लास 4 एम्प्लॉय का। हाँ? क्लास 4 एम्प्लॉय की एज ऑफ रिटायरमेंट है 6। इसमें मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए ऑर्डर हुआ था 2 साल की सर्विस का मैलर्ड, बट इसमें रिट अपील डेली वेजर हैं आप? जी क्लास 4। तो वो तो कहाँ होगा, हमारा तो ऑर्डर ही, आप उसको भी रिट अपील में ले जाइएगा। हमारा ऑर्डर है कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनएस एज, बट डेली वेजर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनएस एज ऑफ सुपरएनुएशन, क्योंकि फंडामेंटल रूल्स उन पर लागू नहीं होते। हमारा जजमेंट है, हम उसमें भी कर देते हैं। आप इसको भी रिट अपील में चैलेंज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। लिखिएगा, श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। इसमें मॉनेटरी बेनिफिट का देने का ऑर्डर हुआ था। किसमें हुआ था? हमारे केस इसमें हम गलत, हम इसको कह देंगे ना, पिटिशनर हैज फाइल्ड दिस पिटीशन, तो उसको वो क्या आपका मॉनेटरी बेनिफिट देने का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है वहां पर उसको रिट अपील में? नहीं, वो हम मॉनेटरी बेनिफिट देने का जो ऑर्डर हुआ था उसको हमने अथॉरिटी को रिप्रेजेंट किया। कहाँ है मॉनेटरी बेनिफिट देने का ऑर्डर? ये एनेक्सर P4 पढ़िएगा क्या ऑर्डर है भाई, तो समझे हम भी इसको। कैसे मिल जाएगा मॉनेटरी बेनिफिट? इसमें देखिए, इसमें मिल जाएगा पेज नंबर 22 में। हाँ पेज 22 पढ़ रहे हैं हम, कैसे मिल जाएगा? उसके बाद हमने रिप्रेजेंट किया। लिखिएगा, पिटिशनर्स कंटेंशन इज दैट पिटिशनर हैड filed WP 25227/18 and a coordinate challenging the order dated 18/10/2018 superannuating the petitioner with effect from 31/10/18 on attaining the age of 60 years. Coordinate bench had disposed of the petition, saying that the order dated 3/8/21 passed in WP number 13115/19 shall apply mutatis mutandis in the case of the petitioner, and therefore he be given monetary benefits accrued to him. Next para. This prayer for grant of monetary benefit has been rejected by the Annexure P1 page number. Annexure P1 by the concerned authority, hence this writ petition. Next para. This court has, making an exhaustive reference to the provisions contained in the fundamental rules, has distinguished the orders of the coordinate bench passed in WP 13115/2019 इन वो केस का लिख लीजिएगा, नाम ले लीजिएगा, इतना and has held that the fundamental rules under which मध्य प्रदेश अर्धवार्षिकी आयु संशोधन अधिनियम has been issued is not applicable to daily wages as they are not holders of the civil post, and in view of this said decision, since petitioners are not the holders of the civil post, they are not entitled to either enhanced age of superannuation as notified for the civil servants, nor entitled to any arrears of pay. Therefore, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed. ये कनेक्टेड भी सेम है सर, 3 भी सेम है, पर उसमें 103 वो मेरा 102.1 हाँ दोनों में सेम ऑर्डर कर दीजिएगा। चलिए, उसमें मैं नहीं, हाँ उसमें 102.1 में नन करके सेम ऑर्डर कर दीजिएगा। चलिए, Please, your lordships. Lord, this matter is covered by your lordship's judgment. It has been subsequently followed by coordinate benches as well. Lords, खाइए। statement of daily wages. Lords, my case is also the same. I had been removed, orally restrained from my services in 1996. Since then, Lords, I have been pursuing my case. There have been several representations. म्यूटेटिस म्यूटेंडिस ही कर दीजिएगा, सेम ऑर्डर। Highly obliged. Sahil Sonkusle. Serial number 106
serial number Ajit Kumar Singh, None for the petitioner, despite mentioning the case for out of turn hearing. Respondents have filed a response saying that since FIR dated 10/11/2020 has been registered at EOW Bhopal, registering case crime number 32/2020, petitioner is not entitled to disbursement of the gratuity amount. Next paragraph. As nobody is appearing for the petitioner despite mentioning the case list after 6 weeks. serial number 101. My lords, there were 3 MPs, my lords, similar MPs. My lords have already decided one. That can be disposed of with the objection. हमारे ऑब्जेक्शन पे आप अरे तो ठीक है अब आपका तो Even the respondents have made a request. Even the last. ये सेम ऑर्डर कर दीजिएगा, ये लीजिए, रखिए, सेम ऑर्डर कर दीजिए, चलिए। Serial number Ajit Kumar Singh, None for the petitioner, though a request has been made for out of turn hearing. Case is adjourned. List of जी बताइए मैडम, Sir, my senior is not. इनका नाम डाल लीजिएगा वो सब काट के। आपका शुभ नाम बताइए। Priya Misra. Priya Mishra, placed for adjournment as arguing counsel is not available. Case is adjourned. List after 4 weeks. चलिए। serial number 112. Shiv Kumar Ravanti, Lordship, I'm praying 2 weeks time to file reply. My lord, last opportunity 3 बार टाइम ले चुका है स्टेट my lord इसमें। एक सब देख लेते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी हो चुकी है जी 3 हो चुकी my lord इसमें, 6/10 में हो चुकी 4 वीक, 20/11/2023 में 4 वीक टाइम, 11/1/2003 में 4 वीक टाइम। देखिएगा, by way of last indulgence, time was granted to the state on 11/1/2024. Despite last indulgence, reply is not filed. Subject to payment of cost of ₹2,000 to be recovered from the erring official. 3 weeks time is granted to file reply. List in the week commencing 18 March 2024. serial number 130. Indira Singh State. The recovery matter after the retirement of the employee. Praying 4 weeks for reply. That on 16/8/2020. Neeraj Singh Chauhan for the petitioner. Shri Manas Mani Verma prays for and is granted 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. In the week commencing में In the week commencing 8 April 2024. Serial number 150. Shri Rajesh Kumar Pandey, My lord, petitioner seeking for the compassionate appointment, my lord, basis of the parity, my lord. क्या parity? The similarly nephew of the who were died in the service, my lord, has granted an exit P3, my lord. Biren Singh Chauhan name is reflected for respondent number 2, my lord. They are contesting. मत आने दीजिए उनको। आपने बताया उनको। Petitioner's intention is that petitioner is seeking compassionate appointment on the basis of the parity, in as much as nephew of the petitioner has been granted compassionate appointment. By the order dated? My lord, page 43. Number of the employee at least 52%, my lord. My letter was sent before the state government is To several persons, but petitioner has been denied the parity. Fresh representation to the Commissioner Municipal Corporation Jabalpur, who shall consider and decide the same within period of 30 days. 15 दिन, 30 दिन. My lord, This court has not expressed any opinion on the merits. my lord, looking to an exit P3, my lord. हाँ, in the light of annexure P3, चलिए. Sir. Sanjay Kumar Singh, My lord, I'm praying 4 weeks for reply in this. लिखिएगा, none for the petitioner. Shri Manas Mani Verma prays for and is granted 4 weeks time to file reply. List after 4 weeks. Cause this number
115 वो तो हो गया, 115 हो गया। चलिए 150 में नाम डाल दीजिएगा इनका। क्या शुभ नाम है आपका? मयंक गुप्ता जी का नाम डाल दीजिएगा। चलिए R224 R224। चलिए नेक्स्ट केस। serial number 153, serial number 153, the Ayush Chaudhary. None for the petitioner despite mentioning the case for out of turn hearing. Case is adjourned, list after 8 weeks. चलिए Serial number 151, the Rajesh Gupta. My lord. In this case, my lord, by annexure P2, my lord. ऑनरेबल कोर्ट ने my lord FIR क्वेस्ट किया था हमारे अगेंस्ट में, रिस्पोंडेंट ने FIR रजिस्टर्ड कराया था अंडर सेक्शन। उसके बाद my lord ऑनरेबल रिट अपील हुई, रिट अपील में ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे कर दिया इस ऑर्डर को, और उसके साथ साथ पिटिशनर को भी इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट किया my lord। ठीक है। फिर उसके बाद my lord बाई एनेक्सर P3 my lord जी, ये अथॉरिटी ने my lord हमारे खिलाफ फिर से जो है फोर्स कंप्लेंट के बेसिस पे हमारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है my lord। कहाँ बंदिश कहाँ है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करने में? my lord वो जो ये कर रहे हैं my lord, ये जो शिकायत करता है उसका मेरे जो अपॉइंटमेंट हुआ था मेरा हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट के बेसिस पे, इसका कोई लोकस नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट माय लॉर्ड ये ना तो जो है इस अपॉइंटमेंट में ना तो शामिल हुआ था, ना तो इसका कोई शिकायत से लेना देना नहीं। इवन पिटिशनर बुलवाते हैं, लिखिएगा इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ फॉर रजिस्टर्ड एडी पोस्ट विद इन 7 days, रिटर्नेबल 4 weeks। चलिए इन मेल वाइल माय लॉर्ड वो जो इंक्वायरी इसमें माय लॉर्ड एक छोटा सा निवेदन हमारा सुन लें, ऑर्डर मैं चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। माय लॉर्ड इसमें क्या है, ये टोटल जो है मेरे खिलाफ मैंने जो 50,000 रुपए का इन्वेजलमेंट का इन्होंने हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाया, उसके खिलाफ इन्होंने FIR रजिस्टर कर दिया, जबकि मैंने कहा वो अमाउंट जिसके प्रति ये एलिगेशन लगा रहे हैं वो अमाउंट ऑलरेडी जो है लोकायुक्त ने ट्रैप केस में जब्ती बनाया। वो ऑफिसर माय लॉर्ड वहां पे अपॉइंटेड था एज ए असिस्टेंट कमिश्नर माय लॉर्ड, वो ट्रैप हो गए, तो वो अननेसेसरली मेरे खिलाफ इस तरह से फोर्स कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा रहे हैं माय लॉर्ड। नहीं वो ठीक है इनका जवाब आने दीजिए ना। और ये कभी जो है मेरे घर की शिकायत करेंगे कि इनका मकान जो है तो बना हुआ है, कभी जो है मेरे नौकरी की शिकायत करेंगे। अभी माय लॉर्ड इन्होंने जो है मेरी एक कंप्लेन कर दी। ये आनंद मिश्रा जी शिकायत कर रहे हैं? यस माय लॉर्ड, ये इन्होंने ही फोर्स सिग्नेचर करके, एक में हिंदी में सिग्नेचर होता है एक कंप्लेन में, एक कंप्लेन में अंग्रेजी में सिग्नेचर। रुक जाइए जी इशू नोटिस करके 151 में notice is waived by Shri Manas Mani Verma for respondents number 1 to 5. Let notices be served on respondent number 6 and 7 by Hamdast mode by taking steps within 3 working days. Let reply of the state government and the allegation of the petitioner that respondent number 6 and 7 are deliberately harassing the petitioner in as much as there is a stay on the criminal proceedings initiated by the state. Let reply be filed on or before 12 March. That what was the application of mine to the complaint made by the respondent number 6 and 7 by the disciplinary authority. List this case on 13 March 2024. मतलब एक निवेदन और है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इंक्वायरी रिपोर्ट बुला ले मतलब तो सारा क्लियर हो जाएगा। You are wasting time. Next case. Petition is against the order of termination of the Gram Rozgar Sahayak without departmental inquiry, without any apport. Petition was appointed by annexure P4 Lordship as Gram Rozgar Sahayak by the Sarpanch. Order of termination कहाँ है? Annexure P1 Lordship. In similar matter Lordship, it was reflected the Sokaz notice. I have mentioned the Sokaz notice annexure P2. It is reflected in the impugned order 23/1/2024। शोकाज नोटिस में अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रपोज किया है पेज 13। एंड ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन वाज पास्ड इन P1 लॉर्डशिप। ठीक है, इशू नोटिस टू लॉर्डशिप काइंडली सी इन सिमिलर मैटर P7 हमने लगाया है
And एक और है, the Honorable High Court has quashed this order because they, as per the rules and norms framed by the Rozgar Council, the opportunity should be given and the departmental inquiry is necessary, Lordship. P7 and this order is. ठीक है, इसी ऑर्डर को तो सुबह भी Lordship. एक्सपायरिटी करके सेम ऑर्डर कर दीजिए। I move like. अपील का भी प्रावधान है सर इसमें। हाँ ठीक है, करा दीजिए। Serial number 59. My lord, I am praying for 10 days time to find the reply. MP में श्री मानस मणि वर्मा फॉर द स्टेट श्री, आपका शुभ नाम बताइए। अंकित कुमार पांडे। अंकित कुमार पांडे प्लेस फॉर एंड इज ग्रांटेड 4 weeks टाइम टू फाइल रिप्लाई लिस्ट आफ्टर 4 weeks। Serial number 68. Lordship, it's a contempt petition for non-compliance of order dated. petition है यहाँ तो। Sir, both are connected. अच्छा हाँ, फिर For non-compliance of order. रिव्यू तो सुन ले, रिव्यू में क्या चाहते हैं ये? कौन अपीयर हो रहा है रिव्यू में? None for the petitioner seeking review of the order dated 15/2/2023. I am for appealing for. आ रहे हैं क्या आप? अच्छा, श्री मानस मणि वर्मा for this petitioner seeking review of order dated 15/2/2023 passed in WP number 2978/2023. क्या कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा समझाएं तो। रिव्यू ये भी स्टेनो बनाता है क्या? क्या क्या रहे हैं इसमें? किस बात पे, किस ग्राउंड पे रिकॉल करना है ऑर्डर 15/2/2023 का? जी ग्राउंड तो बताइए थोड़ा। नो ग्राउंड इज मेड आउट टू शो इंडल्जेंस इन द मैटर ऑफ रिकॉल ऑफ ऑर्डर डेटेड 15/2/2023 पास्ड बाय द कोऑर्डिनेट बेंच इन WP 2978/2023। Accordingly, review application fails and is dismissed. Next para. Contempt case में लिख दीजिएगा, respondents are granted 4 weeks time to make compliance of the order passed by the writ court, and with the extension of time, contempt proceedings are dropped and disposed of. चलिए। हाँ बताइए। मलट 102 नंबर पे लगा था। क्या हो गया? रिक्वेस्ट नहीं किया था माइलट हमने, और ये हुआ कि नंबर आएगा नहीं तो फाइल भी नहीं ला पाए थे। कोई बात नहीं, 102 तो हो गया तो चलिए। मालट मेरा अलग केस है, इनसे थोड़ा सा क्या है, हमारे वाले में स्टे है मालट। ठीक है, और साथ में डिस्पोज ऑफ हो गया, आप देखेंगे इसको। चलिए 61 बताइए, 61 में क्या कहना है? 102.1 में इनका नाम डाल देना, तिवारी जी का, राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी का नाम डाल दीजिएगा। चलिए। हाँ क्या हुआ, जवाब अगर आ गया इसमें? यस है? कब आया? स्टेट का जवाब नहीं है। हाँ? स्टेट हैज टू फाइल इट। पेंशन किसको देनी है? फैमिली पेंशन रिस्पॉन्ड नंबर 6 को देनी है कि स्टेट को देनी है? प्राइवेट रिस्पोंडेंट है इसमें, सक्सेशन का डिस्प्यूट था मेलट, दो वाइफ के बीच में मेलट। हाँ फिर
तो मालट यहाँ से जो सक्सेशन की रिवीजन यहाँ हुई थी वो रिमांड कर दिया गया है। इसलिए आज ये 19/2/23 को लगा था कि वहाँ मतलब जो रिमांड किया गया था उसके ऑर्डर के बाद है। वो ऑर्डर आ गया नहीं, अभी वहाँ नहीं हुआ है। लिखिएगा नन फॉर द पिटिशनर श्री, आपको शुभ नाम बोलिए। एनके शाह हैं एनके शाह एनके शाह submits that order of the succession court on remand is still not available. He prays for and is granted 4 weeks time to bring it on record. List after 4 weeks. मलट एक छोटा सा निवेदन था मलट, 123 में हमने रिक्वेस्ट नहीं किया था हमारा प्रेजेंस मार्क कर दे मलट इंटरव्यूनर से 123 में 123 में तो एडजॉर्न हुआ है, बस कुछ नहीं हुआ है। चलिए हो गया। none for the petitioner. Case is adjourned. List after 4 weeks. पांडे परागवादी None for the petitioner. Notice issue notice. Notice is waived by Shri Amit Mishra. Amit Mishra. For respondents, he may seek instructions and file reply within 4 weeks. List thereafter. serial number 54 मदट इसमें मदट याचिकाकर्ता मदट अनावेदक क्रमांक क्या हो गया? मदट इसमें मदट दैनिक वेतन भोगी के पद पर मदट कार्यरत था। और उसके बाद मदट उसके ऊपर वो 341 307 294 notice to the respondents on payment of PF per registered DD post within 7 days, returnable 4 weeks. चलिए serial number 55 लास्ट ऑर्डर शीट माय लॉर्ड 12/1/2024 माय लॉर्ड ऑलरेडी 2 बार ग्रांटेड टाइम ले चुके हैं। मैंने भेज दिया सर, एफिडेविट क्लिक कर लिया, परसों आ जाएगा। ठीक है। श्री पुष्पेंद्र पांडे for the petitioner Shri Grishma Jain again prays for time to file the reply. By way of last indulgence, 3 days time is granted to file reply. List in the week commencing 26 फरवरी 2024. My lord, with permission, may I make a request, my lord? बीच में नहीं, sorry. Next case. serial number 66 भागीरथ सिंह This is matter pertaining to auction proceeding, my lord. जी Allotment of the shop. This is matter pertaining to auction proceeding, my lord. Allotment of the shop number 10 and 28. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. चलिए my lord, record call. आएगा, जवाब आएगा तब देखेंगे। serial number 67 Lord, in this matter, we have moved an application for ignoring the default notes. The registry had pointed out the default that there is some delay. Lord, there is some delay, my lord. But we sealed the impugned order in a 482 petition, which was withdrawn with the liberty to file this criminal review. कहाँ है वो order? Lord, that order is annexure P6, my lord, placed at page number 42 of my. पढ़िएगा। Learned counsel for the applicant prays for adjournment. This case has been wrongly listed before this court. Mere withdrawal of a 482 petition will not bestow jurisdiction on this court. Let the matter be listed before the appropriate bench having roster to hear and decide criminal revisions. चलिए serial number 58 P. Parekh Pandey
None for the petitioner. Readings are complete. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. कौन से केस में? My lord 68. हाँ बताइए. A senior will be there in a minute, my lord. ऐसा नहीं होता. चलिए. Next case. Number 59. जी मैडम बताइए. This matter has to be argued finally. लिखिएगा. मिस कौशिकी शर्मा. सबमिट. तो फिर करिए ना, शुरू करिए. This is the case wherein a petitioner was removed from his services without giving any opportunity. किस पद पर काम करते थे वो पहले ये बताइएगा. He was working on the post of a district coordinator. हाँ, कहाँ है इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर? A1. A1 तो है नहीं, इसमें P1 है. जी मैडम P1. जी. मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद. क्या है ये? कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है 1 वर्ष के लिए. क्या है ये जन अभियान परिषद? ये जो एनजीओ मध्य प्रदेश में जितने भी एनजीओ वर्क करते हैं सर, उनकी रिपोर्ट बनाने उनके लिए दिस पर्टिकुलर कमिटी और पर से आई कुड से दैट काउंसिल वाज क्रिएटेड. अच्छा. एंड दिस वाज जी. फिर क्या हुआ? he was continuously working on the said post for 7 years, my lords. But my lords, by annexure A3, my lords, his services was terminated, my lords. क्या? My lords, P3 may be seen, page number 31. जी. Lords, may I read? जी. एजुकेशन इन्होंने रिस्पोंडेंट्स डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर लगाया था कि कुछ मिसबिहेवियर से रिलेटेड हमारे ऊपर कुछ एलिगेशंस थे. दे हैव टेकन दैट पैरा 1 में माय लॉर्ड्स. इस पद स्थापना के दौरान श्री वर्मा के विरुद्ध विकास खंडों के क्षेत्र भ्रमण न करने तथा अधीनस्थ महिला कर्मचारियों के साथ अशोभनीय व्यवहार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के संबंध में 2 शिकायतें प्राप्त हुई. दोनों शिकायतें जांच में प्रमाणित पाई गई हैं. This particular allegations which has been put forwarded by the respondents is wrong, my lords. My lords, my reply may be seen, my lords. Yes, sir. Reply is an action. My lords, I'm so sorry. My rejoinder may be seen. जी. Lords, RJ1 and RJ2. Yes, क्या है RJ1? My lords, ये जो अभी इंक्वायरी की बात ये कर रहे हैं और जो कंप्लेंट्स की बात मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर में की गई है रिस्पोंडेंट्स द्वारा, मैं लॉर्ड्स ये जो RJ1 है ये क्लियर करता है कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मेरे अगेंस्ट कंडक्ट करी गई थी जिसमें मुझे क्लीन चिट दे दिया गया था विद रिगार्ड्स टू द एलिगेशंस पुट फॉरवर्डेड. एक सेकंड नहीं पढ़िएगा, RJ2 पढ़िएगा. क्लीन चिट नहीं है, पढ़िएगा थोड़ा सा, इसलिए क्लीन चिट पढ़ना जरूरी है. आपका कन्फेशन है, कन्फेशन की लाइट में विभागीय जांच खत्म की गई. पढ़िएगा इसको. डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन क्लीन चिट एंड क्लोजर ऑफ द इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ योर कन्फेशन? पढ़िए इसको, पढ़िए तो. श्री मोहित सिंह वर्मा मैंने सेकंड आया कि कार्य प्रणाली नहीं, पहले ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए.
श्री मोहित सिंह वर्मा जिला समन्वयक। आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं जी, हिंदी भी पढ़ना जरूरी है मध्य प्रदेश की। जी जी जी। के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराए जाने पर प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री मोहित वर्मा को प्रत्यक्ष सुनवाई में दिनांक 7/2/2011 को राज्य कार्यालय बुलाया गया था। श्री मोहित सिंह वर्मा परम श्री प्रदीप पांडे जी एक डॉक्टर ये इनको भी हिंदी लिखनी नहीं आती, माननीय उपाध्याय नहीं उपाध्यक्ष होता है जी के अच्छा, दोनों एक जैसे ही हैं मतलब जी। फिर तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, इनको रखिए नौकरी में, जैसे आप वैसे वो। दिया गया कि उनके द्वारा अतीत में जो भी त्रुटियां उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, दे विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। चलिए हाँ आगे बढ़िए। श्री मोहित वर्मा के कार्यों एक कार्य प्रणाली के निरंतर अनुश्रवण एवं किए जाने तथा श्री मोहित सिंह वर्मा को भविष्य में उनके अधिकारियों के प्रति अनुशासन बनाए रखना, अनावश्यक पत्र व्यवहार न करने तथा लेखा संबंधी कार्यों में उपयुक्त वित्तीय अनुशासन बनाए रखने संबंधी निर्देश देते हुए जांच समाप्त की जाती है। हाँ ठीक है, फिर मतलब इसके बाद क्या हुआ? My contention with regards to the allegations put forwarded by the female workers was ultimately I was given a warning and ठीक है, वो तो ठीक है। ये आपके बॉन्ड की कंडीशन क्या है? 6, 10, 11 ये तो देखें जरा। Where is your bond? Where is your service bond? मतलब P1 जो है P1 सर्विस बॉन्ड है क्या? ये बॉन्ड है? मतलब that ये तो संविदा की शर्तें लिखा सेवा, इसमें लिख रहे हैं सर्विस बॉन्ड। तो 6, 10, 11 का फिर कैसे उल्लंघन हुआ ये तो बताइएगा। अगर ये सर्विस बॉन्ड है तो आपने लिखा है इम्प्यूग्ड ऑर्डर में कि कंडिका क्रमांक 6, 10, 11 का उल्लंघन। 11, 10, 6, 10, 11 क्या है पढ़िएगा थोड़ा सा। That bond is not on record. आप ले आइए, आपने क्यों नहीं फाइल किया रिप्लाई के साथ में अपने? I'll bring it. इनका नाम डाल के श्री अमित अब मिश्रा प्रेस फॉर टाइम टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड कॉपी ऑफ द सर्विस बॉन्ड एज वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पिटिशनर। लेट नीडफुल बी डन विद इन 7 days। लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 4 मार्च 2024। So in this matter, I am bring 2 weeks time to bring alas on record. Shri Swapnil Khare Praise Foreign is granted 2 weeks time to bring legal heirs of the deceased employee on record list after 2 weeks. Oh, nice. Lordship, आइए फाइल करिए लॉर्डशिप इसमें ड्यूरिंग पेंडेंसी लॉर्डशिप पिटिशनर्स की डेथ हो गई 2103/24 an application for substitution of legal heirs of the petitioner. Same is allowed that necessary correction be carried out within 3 days. List thereafter. Oblige. Even number 72, Shri Ram Supal Chaturvedi. किस चीज की रिकवरी है आपकी? ये रिकवरी आफ्टर रिटायरमेंट है लॉर्ड। देखिएगा पिटिशनर्स केस इज इन रिगार्ड टू रिकवरी आफ्टर सुपरएन्युएशन। किस चीज का है ये? Petitioner has posted on the post of constable. Thereafter, he promoted ASI, and he has retired in year 2006. This issue is sub judice before the larger bench of this court in WA 815/17. List this case immediately on decision of this said writ appeal. But in this case, no, billed 9/1/2014 and order was passed, Mala, to file affidavit one.
अभी तक नहीं किया इन्होंने, कर दिया was filed on 23rd January 2020. फाइल कर दिया है एफिडेविट। इन्होंने उसमें कहा था कि हमारी एंटीसिपेटरी क्यों बंद कर दी है। एक सेकंड पढ़ लेते हैं ना एफिडेविट में क्या लिखा है। देखिएगा परयूज, जिसमें ऊपर लिख लीजिएगा परयूज्ड एफिडेविट ऑफ वंशरी एन.के. शाक्य, सन ऑफ लेट श्री काशी प्रसाद शाक्य, वर्किंग एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रेडियो ब्रैकेट में कॉमा हेडक्वार्टर्स भोपाल, mentioning therein that due to technical issue of IFMIS not functioning properly, anticipatory pension of the petitioner could not have been disbursed in favor of petitioner. Full stop. It is submitted that, however, the deponent had regularly processed and submitted the bills of the anticipatory pension of the petitioner before the Treasury. Full stop. Deponent has further mentioned that, along with the withheld anticipatory pension, a sum of rupees 8,43,682 has been paid to the petitioner, and full stop. However, no proof of IFMIS system being not functional for such a long period. कब से नहीं मिल रही थी एंटीसिपेटरी पेंशन? फरवरी 2023 from February 2023 has been brought on record. Let forensic report in regard to non-functioning of the IFMIS system and technical issue be brought on record by the same deponent, failing which this matter may be referred to the Cybercrime Division for registering FIR against the delinquent and taking action. Let affidavit of the Joint Director, Treasury and Accounts, District Pension Officer be also brought on record in this behalf within 7 days. करस्पॉन्डिंग चल रही है मेरे। चलने दीजिए ना, 7 दिन में ले आइए जरा। इतनी आसानी से आप लोग झूठ बोल देते हैं, आपकी पेंशन रुकवा देते हैं। लिस्ट ऑन 29 फरवरी, top of the list. It is made clear that if aforesaid requirements are not fulfilled, then Superintendent of Police Radio, Senior Superintendent of Police Radio, Police Headquarters, Radio Headquarters, Bhopal shall remain personally present. सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आइए, ठीक है खटका साहब? जी। उसमें और एक और लाइन लिख लीजिए, respondent deponent will also show that why interest be not charged for illegally withholding the anticipatory pension and be not debited to his personal account. None for the petitioner. Pleadings are complete. List this case for final hearing. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. Should compliance of the last order should be compliance report is filed today itself. क्या है काम? आज ही फाइल करिए क्या? इसके साथ डे आफ्टर टुमारो रख लिया। Compliance report in compliance of order dated 22/1/2024 is reported to have been filed today. Same is not on record. Let it be placed on record list next week. Serial number 55. Serial number 75. Class number. None for the petitioner.
This is a recovery matter. List this case after decision in WA 815/17 नन करके चलिए. Serial number 76 5 None for the petitioner. Pleadings are complete. Case is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. Serial number 7 एक सेकंड रुक जाइए. चलिए. चलिए. Serial number 77 My Lord, in this case, I am playing 1 week time. Respondent number 8 has died on 13th of this month. Praise for time to bring some document on record. LRs on record of respondent number 8, my Lord. Also, the legal heirs of the respondent number 8. On his request, 2 weeks time is granted to do the needful list after 2 weeks. Or वो 77.1, he is the petitioner and his appointment has been challenged in 77. ठीक है, देखेंगे. चलिए. Serial number 68 Patna. रिकॉर्ड है इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का. I am playing time 2 weeks. जी श्री आपका शुभ नाम बताइएगा. KP पाठक. कालिका प्रसाद पाठक फॉर द पिटिशनर. श्री मानस मणि वर्मा गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट. श्री अरुण कुमार सिंह फॉर द रिस्पॉन्ड नंबर 5. लेट रिकॉर्ड ऑफ द सिलेक्शन ऑफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एट आंगनवाड़ी केंद्र बागड़ डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी बी कॉल्ड फॉर लिस्ट आफ्टर 2 weeks. जो करना है कर दीजिए. जी. Serial number 79 भूपेंद्र कुमार शुक्ला स्टेट होता हूँ. मतलब ये रॉन्गली लिंक हो गए, मतलब दोनों अलग अलग मैटर. 79 जो है वो आंगनवाड़ी का है. 79.1 थर्ड टाइम पे स्केल. तो थर्ड टाइम पे स्केल तो आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करना है. सेकंड राउंड. अच्छा चलिए. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में रिकॉर्ड है आपका? नहीं सर. 79 में लिखिएगा रिकॉर्ड, वही सेम रिकॉर्ड कॉल करने वाला ऑर्डर कर दीजिएगा. 79.1 में लिखिएगा इट हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड विद दिस केस. दिस मैटर हैज नथिंग टू डू विद WP 9280/19. लिस्ट दिस केस सेपरेटली. रिप्लाई आ गया 79.1 में. मिनट का है हमारा. अच्छा को दे दिया है हमारा डेट में. हाँ हाँ. P8 ये कहा कि आपकी CR जो है 5 वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन उसमें 10 अंक कम है जी. और हमने ये रिजॉइंडर में लगाया जो सेम हमारे जैसा अभी पेंडिंग भी है उनकी पिटीशन. उसमें भी उन्होंने कहा था कि PC गुप्ता के 10 अंक कम है. और इसमें रिजॉइंडर की कॉपी मिली नहीं. इसमें 79.1 में रिजॉइंडर की कॉपी दे दीजिएगा. लेट कॉपी ऑफ रिजॉइंडर बी सप्लाइड टू श्री गौरव तिवारी appearing for respondent number 2. During the course of the day, he may file additional return if any. List in the week commencing 11 March 2024. चलिए. Serial number 80 शरद गुप्ता स्टेट. It may be taken up in the first week of March. मतलब क्या हो गया? मतलब in fact, not. फिर आप लोक अदालत में व्यस्त हो जाएंगे. लिखिए. नहीं सर. On request of श्री शरद गुप्ता, cases adjourned. List in the week commencing 1 अप्रैल 2024. Any मार्च में कर दे सर. दे दीजिएगा. Pandey prays for time to respond to the affidavit filed by the state during the course of the day. Is granted 3 weeks time to do the needful list thereafter. Number 82 इसमें रिकॉर्ड्स आने पे आ गए रिकॉर्ड्स के. आपसे पूछ रहे स्टेट आ गए क्या रिकॉर्ड?
हाँ सब है। है क्या रिकॉर्ड है ये? लट्स में फॉर्म सबमिशन जो था उनका रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 का, हाँ वो उनके फॉर्म्स आने थे। हैं? फॉर्म्स आने थे सर, सब एप्लीकेशन, फॉर्म्स एप्लीकेशन। क्या था? और इसमें केस है रोजगार सहायक योजना की अपॉइंटमेंट्स के लिए। हाँ इसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 का जो उनका फॉर्म था वो डिसमिस कर दिया गया था, जो कि मेरिट लिस्ट में मेंशन था। एक सेकंड, रिकॉर्ड आ गया ना आपके पास में? हाँ दिखाइएगा क्या है रिकॉर्ड, क्या कहता है। हो जाएगा ना अभी 6 मिनट में? नहीं तो 6 मिनट में हो जाएगा ना? हाँ क्या नाम कृष्णा था? धर्म तो बुलाइए इकबाल को, फिर हैंग हो गया। और आपको क्या नाम? फ्लैग जी फ्लैग। क्या बताऊं? जी This is the both are the form is there. हैं? दोनों सबमिट लो। हाँ लेट हिम कंप्लीट। ब्लड इसमें इशू ये ना कि एडवर्टीजमेंट के बाद एडवर्टीजमेंट में कंडीशन दी गई थी ब्लड। काइंडली सी पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 P1 जी। हाँ सर क्या में आवेदन पत्र पर अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जी ठीक है। हाँ फिर इन्होंने फॉर्म सबमिशन के टाइम पे इनमें परमानेंट रेसिडेंस का फॉर्म नहीं सबमिट हुआ था। अच्छा इस पे मेरिट लिस्ट पे इनका फॉर्म रिजेक्टेड था। काइंडली सी मतलब हायर सेकेंडरी कंप्यूटर उत्तीर्ण स्थायी निवास प्रमाण पत्र कहाँ है? सी P2 पेज नंबर 18। हाँ इसमें मेंशन था इनके इसमें कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 का है विकास पांडे जी। हाँ जिसमें उनका रिजेक्टेड दिया गया था। हाँ जिनके बाद इन्होंने मेरिट लिस्ट के बाद ऑब्जेक्शन फाइल किया था, जिसपे मेरिट लिस्ट पे इनके मार्क्स कंसीडर करके उनको अपॉइंटमेंट दे दिया गया। कहाँ है आपका ये प्रमाण पत्र? हाँ तो लिखा है उसमें जो नहीं, हाँ तो लिखा है जाति प्रमाण पत्र की। नहीं निवास प्रमाण पत्र की प्रतिनिधि कहाँ है वो? स्थानीय निवासी का। एक सेकंड दिखा दीजिए वो कहाँ है आपके फॉर्म में? फॉर्म के साथ। अरे कहाँ है फॉर्म के साथ? दिखाइए तो। पेज 25 में देखें सर। पेज 20 है पिटीशन का। May I explain more? हाँ What has happened in this case, Lord? The advertisement, which is, Lord, 23/6/2014 का है। 23/6/14 का एडवर्टीजमेंट है। लास्ट डेट 14/7/2014 है। sir, हाँ it was submitted within time. कहाँ है वो बताइए तो। आपने आवेदन किस तारीख को पेश किया है ये? Lord, इसकी application. डेट क्या है आपकी? जी sir. ये 14/7/2014 की है। Lord, they themselves filed, Lord, my application, which is page 27 of the writ petition, Lord. जी क्या कहा? Kindly appreciate, Lord. हाँ बताइए। तो Lord, it was, Lord, physical application. अरे भाई आपसे सिर्फ जितना पूछ रहे हैं उतना बताइएगा आप।
आपने ये जो पेज 24 पे जो है विकास पांडे का, जी, ये इनका इसमें आवेदन है। ये और आपके पेज- फिजिकल जो इसमें है उसमें उससे अलग है, ये नहीं नहीं, भिन्न है ये पेज 29 देखें सर, पेज 29 ये। आफ्टर पिटीशन। हाँ जी, हाँ इसमें स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, कहाँ है प्रमाण ये पत्र, कहाँ है? लगा भी है ना, ये देखे ना सर हाँ पेज, ये पेज नंबर 25 पर। 25 पर देखिए, 25 पर यस, क्या लगा? देयर वाज ए एक क्लॉज। सेकंड, 25 पर देखने तो दीजिए प्लीज। P3 जी 25 पर किस तारीख को जारी हुआ है ये? लॉर्ड इट वाज, किस तारीख को जारी हुआ है ये? तारीख तो इसमें दिख नहीं रहा फिर है। कैसे मालूम पड़ेगी? 4-5 का है सर, इसमें एक सेकंड, ऊपर- अरे होगा रिकॉर्ड में, कहाँ है? मुझे रिकॉर्ड में दिखा दीजिए जो आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड ये है सर इनके। मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ चलिए, कि देयर वाज ए नहीं, क्लॉज। एक से रुक जाइए आप। श्री आपका नाम डाल के, प्रेस फॉर टाइम टू शो फ्रॉम रिकॉर्ड दैट ओरिजिनल निवासी प्रमाण पत्र वॉज फाइल्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। रिकॉर्ड लीजिए, लिफाफे में लीजिए रिकॉर्ड, लिफाफा सील करिए, कल खोलेंगे। मैटर विल बी टेकन अप टुमारो। सील करिए मेरे सामने इसको, रिकॉर्ड को। नया लिफाफा लीजिए, सील करिए, चैम्बर में लेकर आइए इसको, रिकॉर्ड को लीजिए, आप उठाइए इसको, रिकॉर्ड को। देयर वाज ए क्लॉज। ठीक है, देखेंगे ना, कल रिकॉर्ड देखेंगे। चलिए, नहीं नहीं, टुमारो, टुमारो लिस्ट दिस केस टुमारो फॉर परयूजल ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ फिर आप आए क्यों नहीं? 4 बजे आपने 4 बजे लिखा? हाँ हाँ, यस यस यस, 4 बजे का लिखते, हम कोई नहीं पाए। कैसे?